और अब बारी है सोनाटा सॉफ्टवेयर की और इस कंपनी के सीएफओ जगन्नाथन चक्रवर्ती सर आपको स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। सर हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू जुड़ने के लिए। रिजल्ट स्क्रीन पर आएंगे। डॉलर आय में क्यू ऑन क्यू बढ़िया 25% का जंप, पर सोनाटा के नंबर्स थोड़े से अलग होते हैं। हमें इंटरनेशनल सर्विसेज को और डोमेस्टिक बिजनेस को अलग अलग भापना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले वो इंटरनेशनल बिजनेस कांस्टेंट करेंसी में आए, क्यू ऑन क्यू 0.2% बढ़ी, पर उसके सामने मार्जिन्स अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट हुए। मेरे ख्याल से 540 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन है अगर फॉरेक्स और अदर इनकम हटा दूं। और जगन्नाथन सर ने बढ़िया सी प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें आप मुझे कुछ गणित करना ही नहीं पड़ा, उसमें ही लिखा हुआ था। तो आय लार्जली फ्लैट और मार्जिन्स में तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन। जगन्नाथन सर ये क्यों? ये क्या ऐसा है कि धंधा लाने के लिए, धंधे पे काम करने के लिए मार्जिन सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, ऐसा है क्या, या मैं कुछ और मैं गलत सोच रहा हूँ? Not like, thanks for this opportunity. This is not that way. What happened this quarter is when the EBITDA level, we had three major factors impacting the EBITDA for us. One was one of the large deal. We were ramping up the deal and it was supposed to be closed by 3rd week of June. We couldn't complete that. It is getting completed in Q2. So that had an impact. Also, we had a benefit flowing in the last quarter because of one large management level KMP changes and compensation changes that got a benefit last quarter, which is not there this quarter. Third very important factor is we thought that this is the right time for our AI focus. Hence, we have invested a lot in this AI, more than a percentage point. We have invested in AI for this quarter, and this may continue for a couple of quarters more. You will see a lot of announcement from us coming in. We have updated our go-to-market. We have invested on the leadership for the AI related. We have hired a chief AI officer. And also we have updated our head of business unit for our large customer. Like that, we have invested on the strategic areas and also focus on AI go-to-market solution. This is very important for us, and a lot of announcements will come. Our CEO also has called out during the analyst call that our focus is going to be on AI investment in the next couple of quarters. So these are the three factors which impacted margin. At the PAT level, the forex also played a spoil foot for us. Last quarter was a huge benefit, and this quarter it's a loss in forex. Hence, the Q4 to Q1, there was an impact at PAT level also. Out of this, many of this will over a period of time will recover back. तो आप एक रीजन हो गया कि नए सीईओ साहब का ये पहला फुल फ्लेज्ड क्वार्टर था, तो कुछ ट्रांजिशन से सोनाटा सॉफ्टवेयर इस समय गुजर रहा है। हम मतलब अब नया एआई ऑफिसर, चीफ एआई ऑफिसर, मतलब हम बेसिकली एआई को एक नया वर्टिकल के तौर पे ट्रीट करने जा रहे हैं, ऐसा? Not vertical. We have invested all our solutions. We are adding a AI flavor to it, or AI on the top of all our go-to-market and offering to the customer. Because that is very important for us, and we thought it would be a very important offering to in the current situation in the market. So that requires some investment. We have taken a global consulting firm's advice on this. We have invested on this AI. We have invested on developing a solution. We have hired the leadership. So all these investments are there and will continue for a couple of more quarters. बात आपने कही But थी this will कि help us benefit by year by next year to give a positive momentum in revenue. अच्छा, इसी का फॉलो फिर आपने कहा एआई पे हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, वो भी एक रीजन है मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होने का। हमारे 500 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन में एआई इन्वेस्टमेंट्स कितना था, और सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में भी ये इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करेंगे? इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस बार में कितना इंपैक्ट था, और ये इंपैक्ट मैं मान के चलूं इस FY27 के बचे 3 क्वार्टर्स में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा? So AI investment is not all. As I mentioned to you, last quarter we had a one-time benefit because of the change in the leadership. There were compensation benefits flowed to us in the last quarter, which is not there in this quarter. It was a one-time event last quarter. So that is that component is the major differences in this percentage of margin. The other one was, as I told you, the contract ramp up got a little delayed. Hence, that will be catching up in the coming quarter. AI investment will take a couple of more quarters to pay off in terms of revenue growth. इस समय हमारी
आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक, टीसीवीज कहाँ खड़ी है? और दूसरा, आपने कहा एक लार्ज क्लाइंट के रैंप अप में डिले हुआ था। ये डिले क्लाइंट के एंड से था कि आपके एग्जीक्यूशन के एंड से हुआ? दूसरा, जब आप लोग की ऑर्डर बुक्स बढ़िया हैं तो क्या क्लाइंट्स डिसीजन मेकिंग होल्ड कर रहे हैं या ऑर्डर्स डोल आउट कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं काम धीमा करेंगे? ऐसा हो रहा है क्या मार्केट प्लेस में सर? 3 points you have asked for. This is not delay from the client as such, but this is a large deal. There will be some ramp up delays, plus and minus will happen. And there was a few, few days of delay, so it is pushed to Q2. It is only technically because Q1, Q we are reporting, it impacted Q1, otherwise it will be caught up in Q2. The second you asked about customer order book. Order book has been stable for us and it has been always in the range of 1.18 to 1.24. We have been consistently doing well there. The third impact is because of the customer wanted. This is not exactly a problem of customer. This is an opportunity for us also, and that is we are working on that to scale up the projects and then get the benefit of it. In the large deals, when it comes to the delay in the customer closure, only in large deals there it takes time. It takes 6 months to 9 months for us to close the deal. Otherwise, other things are all other deals are we are seeing a lot of opportunity because of AI. We have been opening up the doors for many deals. The pipeline has been very strong, particularly AI order book has been consistently growing, and AI pipeline is also very strong for us. This is helping us to grow. When except for large deals, there is still a delay in the market. ओके जगन्नाथन सर, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सर कॉन्फिडेंट हैं, ये थोड़ा सा एबरेशन वाला मामला हो गया लास्ट क्वार्टर के बेस को देखते हुए और कुछ इन्वेस्टमेंट्स और नए एमडी सीईओ साहब के कार्यकाल का ये पहला क्वार्टर था, तो इसीलिए थोड़ा बहुत ट्रांजिशन फेज से सोनाटा सॉफ्टवेयर गुजरता हुआ एआई के इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर रहे होंगे जिसका फायदा आने वाले सालों में मिलेगा। तो इसका मतलब है थोड़ा सा मार्जिन जो इस बार कॉम्प्रेस हुए थे उसका पीछे एक एआई इन्वेस्टमेंट्स भी थे और थोड़ा बहुत तो लिंगर ऑन कर रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सर हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट साउंड करते हुए आगे के आउटलुक को लेकर